Hello everyone, what's up? Welcome in my YouTube channel everyone. So I am Leena Shankarpai and today we are going to start our next poem Fire and Ice written by Robert Frost. As I told you, Robert Frost is a romantic poet and he written all the poem based on nature. Romantic poet means love for nature, beauty of nature, and in his poem he has appreciate the beauty of nature. As in this poem also, he has mentioned the two components, fire and ice. That, dear students, you know very well, each and every poem has two meanings, literary meanings and metaphorical meanings. In this short poem also we have two meanings, so deep meaning we have in this poem. So fire and ice here express the profound idea that world would be destroyed by the fire or by the ice. So our human emotions very destroying actually. Here fire and ice compare the human emotions, desire and hatred. So fire stand for desire, crave, lust, and ice stand for hatred. So here Robert Frost want to say that the world will destroy because of our unwanted limitless desire. Unwanted limitless desire and the hatred the human beings have. Because of that, one day the world will be destroyed. So one day, if we will not control our emotions, so our emotions will be destroy the world. Our emotions will be destroy the world. So we have to control our emotions. So in this poem, artistically they have portrayed how the ice and how the fire would be in the world. So do not allow the negative feelings and emotions to control your mind. All negative feelings and emotions come from the outside and this will not come from your inner side. So you have to control your emotions. In this poem we are going to see how the humans emotions, for example unwanted desire and hatred would be end the world. Robert Frost was born on 26 March 1874 in San Francisco, California, US. He was an American poet. His work was initially published in England before it was published in United States. He received 4 Pulitzer Awards for Poetry and Congressional Gold Medal in 1960 for his poetic works. On 22nd July 1961, he was named Poet Laureate of Vermont. His notable works, The Road Not Taken, Fire and Ice, Mending Wall, Stopping by Woods on a Snowy Evening. He died on 29 January 1963, Boston, United States. Let's read poem first. Fire and Ice. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Let's see new words meaning from the poem. Desire, a strong feeling of wanting to have something or wishing for something to happen. Favor, approval, support. Perish, die. Suffice, sufficient. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. In this first stanza, poem expresses the profound idea that the world will end in either of two ways, either by ice or fire. In this stanza, poet want to say फायर से नहीं तो आइस से एक दिन वर्ल्ड will be destroyed, world will be end either by ice or fire.
One group is of opinion that someday the earth's core will get so heated up that would lead to fire destroying the earth's surface. एक पीपल का जो ग्रुप है वो बोल रहे हैं कि जो अर्थ का कोर है, जो कोर है जो है वहाँ से हीट निकलेगा, and because of that heat, because of that fire, the world will be destroyed, the earth will destroy, earth's surface will be destroyed. And on the other hand, the second group, जो second group है, say that if the temperature goes down to an extent that makes लाइफ ऑन अर्थ इम्पॉसिबल, अगर टेम्परेचर बहुत लो हो गया तब आइस से जमकर सब अर्थ विल बी एंड इम्पॉसिबल, जो लाइफ होगा जो इम्पॉसिबल होगा अर्थ के ऊपर, एंड इट वुड हैव द सेम कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट, मतलब पूरा तहस नहस हो जाएगा वर्ल्ड में. सो द पोएट then compares fire and ice with the destructive features of human emotions. और इस स्टांजा में पोएट कंपेयर कर रहा है कि जिस तरह से फायर और आइस वर्ल्ड को एक बार जो एंड कर देगा, उसी ही तरह से जो ह्यूमन की इमोशंस है, इमोशंस कौन से है, फायर इज अ स्टैंड फॉर द डिज़ायर, अनवांटेड, लिमिटलेस वांट, लिमिटलेस क्रेविंग्स, जो इमोशंस है ह्यूमन के, फायर जो डिज़ायर है उसकी वजह से, और आइस विद द डिस्ट्रक्टिव फीचर्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस, आइस स्टैंड फॉर द हेट्रेड. एंड ही सेज दैट फ्रॉम व्हाट ही इज अवेयर अबाउट फेरी डिज़ायर्स ही वुड फेवर द वंस हु से दैट इट वुड बी फायर. वो फेवर करता है कि जो है फायर से ही वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने वाला है. उसके ओपिनियन से, पोएट के ओपिनियन से, वर्ल्ड अगर डिस्ट्रॉय होगा, वर्ल्ड अगर एंड होगा तो फायर की वजह से होगा. ही वुड फेवर द वंस हु से दैट इट वुड बी फायर. वो फेवर करेगा कि जो फायर से डिस्ट्रॉय होने वाला ऐसे पीपल बोल रहे हैं उसका वो फेवर करेगा. एंड बाय सेइंग सो ही ब्रिंग्स अबाउट द आइडिया that human beings let their emotions rule them, and consequence of unmonitored longing is chose. मतलब जो ह्यूमंस के इमोशंस है उसके जो परिणाम होने वाले हैं, इमोशंस मतलब जो फायर स्टैंड फॉर डिज़ायर एंड आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड, वो दोनों भी इमोशंस से वर्ल्ड एंड होने वाला है. And the next stanza said, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. So वो बोल रहा है सेकंड स्टांजा में, अगर दूसरी बार दूसरा चांस मिला, then by not waiving of the first option of fire, अगर ये फायर से नहीं एंड हुआ by chance, he consider if the world has to expire twice, अगर दूसरी बार अगर एक्सपायर होना है, अगर दूसरी बार एंड होना है वर्ल्ड को, तो वो आइस से होगा. आइस विल बी इक्वली कॉम्पिटेंट इन एंडिंग इट. आइस भी उतना ही उतना ही परिणामकारक है एंड करने के लिए जैसा कि फायर है. आइस भी उतना ही परिणामकारक है, उसके ही जैसा वर्ल्ड को एंड करने की क्षमता वो रखता है. ही ब्रिंग्स अबाउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आइस एंड हेट्रेड. वो यहाँ पे बता रहा है कि आइस एंड हेट्रेड, मतलब हेट्रेड जो ह्यूमन का इमोशंस है उसमें भी उतनी कैपेबिलिटी है कि वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन कर सके. मतलब द ह्यूमन कैपेबिलिटी ऑफ इंसेंटिविटी एंड हेट्रेड हैज़ द पोटेंशियल फॉर इनर डिस्ट्रक्शन. वो जो बिकॉज ऑफ हेट्रेड तो उसका इनर डिस्ट्रक्शन हो सकता है. एंड दो स्लो एंड स्टेडी इट हैज़ द सेम इफेक्ट दैट डिज़ायर हैज़ ऑन अस. सो इफ given an option between fire and ice would be just as good as fire to destroy the world. अगर दोनों में से किसी को एक ऑप्शन दे दिया तो वैसे हो नहीं सकता है. दोनों भी ऑप्शन इक्वल है. आइस एंड फायर बोथ आर इक्वल, लाइक डिजायर एंड हेट्रेड बोथ आर इक्वल. दे बोथ हैव द कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, टू डिस्ट्रॉय द earth. So we have to control our emotions. In this poem, poet want to say the humans' emotions are very, very dangerous. If we will not control our emotions, then one day the earth, one day the world will be end.